Yogi Surajnath, Guru Buddhanath ji, with Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakh Nath. Sabadi number 34. deva kalā te sañjama rahibā, bhūta kalā ahārã, man pavanā unamani dharibā, te jogī tata sārã. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Suraj Nath. Yogi Suraj Nath is this person, myself. Keeping discipline is a divine art. Eating is a worldly art. Aware of the breath and the mind and entering into higher consciousness, those yogis know the essential. Some explanation, कुछ स्पष्टीकरण in both Hindi and English. देव कला ते संयम रहबा, संयम से रहना, अनुशासन से रहना, विचारशीलता से रहना, प्रेजेंस ऑफ द माइंड से रहना, यही देव कला है, डिवाइन आर्ट है। देव शब्द से कोई ईश्वर, आत्मा, अल्लाह, परमात्मा, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। देव मतलब वो मनुष्य जो खुले मन से है, गंभीर है, सहज है, जीवन यथाभूत सतदर्शी है। ऐसा पुरुष किसी मत मतांतर मान्यताओं में फंसा हुआ नहीं है, कानी आँख नहीं है। जीवन दर्शन के लिए भीतर बाहर हम जीवन गति को भीतर बाहर से इंद्रियों के मार्फत शरीर में महसूस करते हैं, वेदना भाव पावना के रूप में, और कोई जरिया नहीं है। और जब हम शरीर पर होते हैं, इस भाव पावना के साथ होते हैं, पल पल जो बदलती है, कान सुनते हैं, आंखें देखती है, चिड़ियों का गायन, कीटों का गुंजन, जो भी है, इंद्रियां काम करती है, फंक्शनिंग करती है, विचार नहीं करती। विचार करने वाला छठा सेंस ऑर्गन है, जो चिंतन करने वाला, चिंतन, और वो भी पास्ट मेमोरी के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, डाटा के आधार पर ही विचार प्रक्रिया चलती है। यदि कोई डाटा नहीं है तो उस बाबत विचार नहीं चलता। और वो काल मतलब पास्ट से काल आधारित विचार गति विचार की गति काल आधारित होती है, काल गति होती है। भूत भविष्य, भविष्य भूत, भूत भविष्य, इस तरह से बाकी इंद्रिया तो फंक्शनिंग, बाकी सारा शरीर फंक्शनिंग करता है, हार्ट पंप करता है, आंखें देखती है, अतड़ियाँ इंटेस्टिन्स डाइजेस्ट पचन करती है, इस तरह से। तो विचारशीलता से यथावश्यक दुनियादारी विचार के बगैर संभव नहीं है। सो विचारशीलता का, विचार का इस्तेमाल करना मेलो मित्र की तरह, मगर किसी मत मतांतर उसमें डिज़ाइन करने की ताकत है। वो भूतकाल भविष्य काल होता है, डिज़ाइन करने की ताकत है, तो वो सारी भूत भविष्य बात ही होती है। उसमें हम रहेंगे तो जीवन दर्शी नहीं रहेंगे, जीवन की गहराइयाँ नहीं समझ पाएंगे। यथाभूत सदर्शन से ही जीवन की गहराइयाँ उकलती है। तो इस तरह से जीवन दर्शी होते हुए जब हम शरीर पर होते हैं तो जीवन के साथ होते हैं, अन्यथा हम भूत भविष्य में होते हैं। भाव पवना के साथ होते हैं तो हम शरीर पर होते हैं, जीवन दर्शी होते हैं, अन्यथा हम भूत भविष्य में होते हैं, काल में होते हैं, दुख अज्ञान में होते हैं। इतनी सादी बात है। सो संयम से रहना, अनुशासन से रहना, जीवन सीख से, जीवन दर्शी होते हुए जीवन सीख से रहना देव कला है, डिवाइन आर्ट है। इसका कोई आत्मा, परमात्मा, कल्पना से या ईश्वर, अल्लाह कोई संबंध नहीं। भूत कला आहार, ज़मीनी कला जो है, जो हमारा फूड आहार है, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जो इस वातावरण से आहार लेते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, कुछ संबंध है हमारे, तो उनसे भी हमें आहार मिलता है। तो उस तरह की आहार को समझना, संभालना, उसके प्रति संयम से रहना, उसके प्रति विचारशीलता से रहना, वो भूत कला है। आहार, यथायोग्य आहार लेना भूत कला है, जमीनी कला है। मन पावना उनमनि दharibā, मन थिंकिंग एंड पावना, ये जो चलने वाला है मन, भूत भविष्य को हट करके सारा चेतन, सारी इंद्रिया, सारा शरीर चेतन
और पवन सांस के साथ मन की गति और पवन की गति नेचुरल जैसी है वैसी, कंट्रोल नहीं, प्राणायाम नहीं, अनापान प्राणापान, सांस का दर्शन यहाँ जानकारी नासिका के पास में, नासिका के द्वारों के पास में सांस जैसा आता है जाता है उसका दर्शन, तो मन और सांस दोनों साथ जुड़ गए। इसमें हम नाद सुनेंगे, कीटों का गुंजन सुनेंगे, परियों चिड़ियों का गायन सुनेंगे, जो है वो जो सुन रहे हैं वो सुनते रहेंगे। तो मन थिर इस पल में है सांस के जैसे, इस चिड़ियों का कीटों का गुंजन आदि जो भी है, तो इस सांस के साथ हो, कीटों के गुंजन के साथ हो, ये सुरतियाँ है, अनेक प्रकार की सुरती। इस तरह से नाद की, नूर की, सांस की, वेदना की, जैसी भी है, ऐसी इस नाद के साथ, इस सांस के साथ रहते अब सहज कभी उस नाद चेतनता में पहुँचते हैं जिसमें आपके विचार श्रृंखला शांत हो जाती है। तो उसे अनहद नाद कहते हैं, उसे उनमन कहते हैं। उन मतलब अभाव, ऊपर, और मन मतलब मन की गति, मन की गति से ऊपर होना, विचार श्रृंखला की गति से, विचार की भटकन से ऊपर होना, सहज स्थिर शांत होना, उसे उन्मन कहा जाता है। जो उन्मन में होता है, अनहद में होता है, सहज विचार श्रृंखला के परे सहज स्थिर होता है मन की गति, और मन की गति के प्रति, भाव पवना के प्रति चेतन रहता है। इस तरह से ओ जोगी तत्सार, दो योगीज नो द एसेंशियल, वर्तमानता में रहना ही, काल का भरना नहीं, तृष्णा नहीं, भूत भविष्य नहीं, विचार गति नहीं, विचार और तृष्णा साथ चलते हैं। सो विचार के ऊपर है, विचार चलते हो तो भी ऊपर है, यथाभूत सदर्शी है, या विचार की श्रृंखला रुक गई, थम गई, मन शांत हो गया, सहज हो गया, तो भी यथाभूत सदर्शी। तो उसमें जो तृष्णा विचार की गामिता नहीं है, कालगामिता नहीं, भूत भविष्य गामिता नहीं, यथाभूत सदर्शी है, तो उसमें भव क्या है, भरना क्या है, श्रृंखलाओं का और चित्त संस्कारों का उबलना और निर्जरित होना, अवधूनन होना क्या है, ये बात समझ में आती है। यही ध्यान की गति है, दर्शनी होना है। और ये तत्सार, सत्य को समझते हैं, तत्व को समझते हैं, कैसे क्या भरना है मन में, ये किस तरह से उबलना है। और जो संस्कार एक बार उबलते हुए दर्शन की अग्नि में धुल गए, ध्यान की अग्नि में धुल गए, वो फिर रिकॉर्ड नहीं होते। जड़ से जो भी पर्दे उखड़ जाएंगे वो फिर रिकॉर्ड नहीं होते। काम गंभीर है और सतत करने की बात है। काम के टाइम पर काम में ध्यान दें, जो भी काम करते हैं, बाकी सतत इस शरीर के प्रति, भाव पवना के प्रति चेतन, कुशलता के साथ, सुरति के साथ, संपजानों के साथ, आतापि संपजानो सतिमा, जैसे बुद्ध कहते हैं, उसी तरह से गोरख सुरति, सुरत, सु मतलब सम्यक, राइट, इजी, गुड, और रत मतलब साथ होना। जिसके साथ होने से हम वर्तमानता में होते, सहज होते हैं, वो सुरति है, राइट, इजी एंड गुड लिविंग है। सुरति के साथ रहने से, सांस के या नाद से, और ये भाव पवना सहज है। इसमें अवॉइडिंग नहीं, टालना नहीं है। जो भी इंद्रियों की परसेप्शन, इंद्रियां खुली है, अपना काम करती रहेगी। आँख बंद करने से बाकी इंद्रिया, सारा शरीर अपने आप के प्रति ज़्यादा चेतन होता है। परिस्थिति को समझ करके, कोई ज़रूरी नहीं कि आँख बंद करके ही काम करे, जैसा आवश्यक है वैसा उस तरह से सारी इंद्रियां चेतन रहते हुए, इसको महत्व ना देते हुए, इसको मित्र की तरह इस्तेमाल करते हुए जहाँ आवश्यक है, बाकी इससे मुक्तता, यानी ज्ञात से मुक्तता, बालापन, अजानता, अज्ञान नहीं, गोरख बाला। जो भी कोई जिए गोरख बाला है। ये इग्नोरेंस नहीं, इनोसेंस है। इनोसेंस अपने आप में मन की शून्यता है, वर्तमानता है, चेतनता है, दर्शनी होना है। और इसी में बोधि का जागना है, डिवाइन फायर, ब्रह्म अग्नि कहे, बोधि का जागना है, पन्या का, प्रज्ञा का जागना है, जो मिस्टीरियस रहती है, वर्तमानता में जागती है और मिस्टीरियसली चित्त अवधूनन का काम करती है। सारे काल गति, जो भाव पवना गति है, वो नाम रूप की गति है, वो सूक्ष्म नाम रूप है, वो डिजॉल्व होता है, जलता है, निर्जरित होता है, काल का अंत जलता है, अहम का मरण चलता है, जो मीठा है। इतनी सादी बात है गोरख शब्दी में, थोड़े में बिल्कुल शुद्धता के साथ
और पारदर्शिता के साथ स्पष्ट है. Some explanation in English. Keeping discipline is a divine art. Discipline means being open to learning by understanding the laws related with time, with thinking, and related with the presence of mind. That way, knowing the place and limit of thought or thinking, which is sixth sense organ, the rest of the organs, glands, body works. It works in the present. It doesn't think. Thinking is a little part, sense organ of the brain mind, and that thinks, and that is needed for daily life. Without thinking, our daily life is impossible. And thinking is always possible on the basis of the past, known memory, data. If there is no some memory in the brain mind, in a corner of the brain mind, this thinking brain, thinking organ, sense organ cannot think about that thing. It is so simple. It works on the past. It has its place in daily life, but it is past and future. It has capacities to design, to calculate, to analyze. Okay, we use them rightly, virtuously, being responsible, so that it understands this thinking, understands its place in daily life, and otherwise its limit, that it cannot, it has no potential to come onto and live in the present. The rest of the body or mind or all organs, glands, all these sense organs, they work in present, and when this thought is kept behind, understanding its place when not needed, despite chattering, all of the body is aware of itself. All of the sense organs, this body, the sensations, vibrations are aware of itself. Look, we feel life from within and around through sense organs in the body in the form of sensations, feelings, pavanā. And when we are aware of the body, aware of sensations, feelings, aware of pavanā, we are aware of life as it is, moment to moment. And there is the action of presence of the mind, which is not of thought or thinking. And if we are not aware of this feeling, sensations, pavanā, then we are in thought, in past or future, in time. So the will of time, that is becoming sorrow and ignorance. And with knowing the place and limit of thought or thinking, and when body is aware of itself, the body, all these sense organs and glands and this, they are the observed. And this thinking sense organ is the observer. Observer is a part of this observed. The observer is the observed. Drushta drush ache. The observer is the observed. This is fundamental. These traditions, Vedantic, Quranic, Torah, Biblical, and so on, Shaiva, Vaishnava, and so on, all these thought-oriented traditions, designed by thought, ideas and ideologies, beliefs and traditions, they tend to put this observer, drashta, on a high pedestal, something special, some here and there, in Qayamat, in last day, or this itself is God, I am God, Aham Brahmasmi, and all that thought produced dirt in the name of religion, spirituality. Rubbish. The observer is part of this observed, the observer is the observed. And when this perception is clear, this simple perception is clear, the observer is the observed. Chanta, achanta hi upache, chanta, subject, kshen. Thought arises from non-thought, is a part of this non-thought, body-mind. And thought is the sorrow of ages because it takes wrong turn. It possesses to be capable of producing and giving, bestowing spirituality, heights, God. It is not capable. It has no potential to come unto and live in the present, though it has potential to design, to calculate, which has its place in daily life. Otherwise, if you miss attention for a second or half while walking or while driving your car, you will face accident. No thought. Thought can help in driving, where to go, how to go, traffic rule, direction, destination, technical skills, etc. But while driving the car, actually, it is presence that works. And it's a pity of the world, pity of us, most of us all, that thought is thinking is dominating. It can dominate attention, presence, but it cannot come, it can never come onto presence.
So what is needed is that to understand the place and limit of thought. So the alak sense, freedom from the known by knowing its place and limit. So to be coming to presence of the mind, all this body mind is aware of itself. So this is the divine art. Being aware of itself, being aware of body mind being aware of itself, of feeling sensations of vibration sounds, with skill and diligence, maybe with some surati, atapi sampajano satima, as they say in Buddhists. So surati, surat. Su means right, e.g. good. Rat means to be with something, to be with. So being with breathing as it is, being with the ever vibrating sensation, or being with sound of the thrilling of insects, or any sounds that come from nature, from within and around. Every cell is vibrating. Vibrating means sounding. So when you observe sounding, this thrilling of insects, etc., you feel sounding. Oh, there is no difference as inner sound and outer sound. They are one movement. So that kind of surati is living by that presence of mind with skill. So skill and diligence is the divine art. Eating is a worldly art, Jamini, the earthly, which we need to keep, take care of. Eating is a worldly art. What food we take, what liquids we drink, what environment we live in, so that it grasps, it absorbs this food from nature. What thing we think, what we read, what company associations we are in. So taking care of that is, the food is a worldly art. Worldly art. The art of here and now. Living daily life with simplicity and care and understanding. Aware of the breath and the mind. Aware of the breathing, natural breathing near the nostrils, so that when we are focused on the breathing near the nostrils, so mind and breathing, they are together. This way, or being aware of the sounds of insects, thrilling sounds of, humming sounds of, that they are there every time they are around in nature. So either by being aware of the breathing or being aware of these sounds, you can enter into unmana. Unmana means, un means above, and man means this thinking, chattering mind. You can find yourself in above the mind, above chattering. So you are at ease, calm, and that way being aware of feelings, sensations, this the observer and the observed all together. Being aware of expressions, this feeling of I-ness, the observer, feeling of anger, fear, the observed, and any sensation, tensions, vibrations. This way, being unman, being in with anahad, about this chattering or not even. Maybe this, everything is going on, mind is straying again and again. So coming to this breathing, the awareness of breathing, this awareness of this ever vibrating sensations or sounds, and this language of feelings, universal language is here. All the senses are here. So expressions, so tensions, they are all related. In and out is related. It is like ebb and flow, entering in and spreading around. That way, maybe finding the higher consciousness, the unamana, about chattering or not, you are aware of the life, movement of life as it is. You use thought thinking as needed in daily life, and otherwise you live by the presence of mind. The language of feelings is universal language. It is here, all expressions, muscle, skin movements. By that you know what feelings, and the feelings are related. They are essence of the sensations. So is simple is skill and diligence, skill of living, skill of skill of living by being insightful. The insight into presence of the mind. So about life and its movement as it is this fundamental insight. We feel life from within and around through sense organs in the form of feeling, sensations, pavanā in the body. And when we are aware of the body with skill and diligence, we are aware of life and its movement as it is, and there is no becoming but being. And so ending up the becoming of chains of whatever layers of feeling, sensations, vibrations, they come up, they are being emptied in the fire of observation. Presence is so, presence with freedom from the known, the alak sense is innocence, it is balapan.
It is being Bala, Gorakh Bala. It is innocence, not ignorance. It is ajanta, not agyan. Ajanata and agyan, they are fundamentally different. Innocence and ignorance, they are fundamentally different. Innocence is presence, is wholeness of the mind, is emptiness. It is living very here and now. So, those yogis who live by this with skill and diligence, aware of life as it is, they know the essential. They know what is feeling in of this bhava, pavanā, feeling, sensations we feel. They are recording, they are tapping in, and they becoming and increasing of the consciousness, and in the fire of presence of the mind with skill and diligence, they are emptying, ending, and once whatever layers, feelings, sensations are being emptied, they are gone. They are no more. So this Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakh Nath, is Kalā text, one of the timeless spiritual treasures of humanity. Let us keep intelligence awake. Aage aage. Let us keep bodhi awake. Aage aage Gorakh jage.